अभी इसका फ्यूल ख़त्म है ना, मैं बीच सड़क में अटक भी गया हूँ. They say every good thing should have an end. That's what Kolkata was for me now. ये कोलकाता छोड़ने में ना दुख तो हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज माय होम टाउन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली. I grew up there. I studied, worked, and did a lot more. However, it was time to go. अभी हम आ गए हैं चांदनी चौक. दुकानें भी याद है मुझे यहाँ के. मैदान, ये जगह भी बहुत याद आने वाला है पता है. লাইভ 360 ডিগ্রি শেয়ার করে দিয়েছিস. আমি এমনি লাইভ করেছি 360 ডিগ্রি, আর করার সময় পাইনি কালকে থেকে. Hey guys, so शांतनु आए मुझे सी ऑफ करने. अभी जाएंगे मेरे साथ उलुबेरिया तक. मतलब 1 घंटे का रास्ता है यार. ओके गाइज, सो हियर इज शांतनु साइनिंग ऑफ. इनसे फिर मिलेंगे आगरा में नेक्स्ट फॉर द स्पीति राइड. सही है. ब्रेकफास्ट कर लिया है. अभी यहाँ से फिर चलेंगे. नेक्स्ट स्टॉप शायद 150 किलोमीटर्स पे होगा, वही टारगेट है. चलो यार, टाटा. थोड़ा पीछे दर्द हो गया है भैया जी. मस्त खा लिया. अब निकलते हैं. टेम्परेचर्स आर एज हाई एज ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस. फट रही है यार, मस्त फट रहा है. हो गया है 500 किलोमीटर के आसपास, और 400 बाकी है. थोड़ा नारियल वारियल पिया. अभी चलते हैं फिर. Okay guys, so last leg of the journey begins. बस पहुंचना है बस. So guys, finally it's 9:01 and we have reached Vizag. कुछ भी मिल जाए यार खाने को, बस खाना चाहिए अभी तो. Guys, this masala kulcha actually, it tastes different actually from what we have there in Kolkata, you know. I don't know what flavors are those. Tastes is great. गुड मॉर्निंग. और आज है सेकंड डे एंड आज हम जाएंगे नेल्लोर. से कहते हैं हाईवे भाई. Woke up from a whisper, collared shirt down by my feet, stood on
crowded bathroom rug. Voices filled the rooms upstairs. तो ढाबा मिला एक, आ गए. ज़्यादा लोग यहाँ पे हिंदी समझते नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है. मतलब डायरेक्शंस पूछ रहा था मैं, तो मतलब लास्ट में ऐसा कुछ वर्ड बोलना पड़ता है जो कॉमन है, जैसे कि हाईवे. तो मैं नेल्लोर बोल रहा हूँ कि नेल्लोर का रास्ता किस तरफ पड़ेगा, वो भी समझ में नहीं आ रहा है. तो सिर्फ नेल्लोर बोल रहा था, इतना नहीं बोला. और कंफ्यूज लुक देते हैं ना ऐसे, मतलब क्या बताऊँ. सो गाइज़, एक अच्छा चीज़ हुआ है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है इस फ्यूल इंडिकेटर के बारे में, कि अभी इसका फ्यूल ख़त्म है ना. मैं बीच सड़क में अटक भी गया हूँ, तो एक ऑटो वाले को मैंने भेजा है, थोड़ा एक बोतल वोतल देके पैसे भी दिए हैं. अभी देखते हैं वो आता है कि नहीं. तो मनी, थैंक यू. ये एक बोतल की कीमत. मस्त लग रहा है सूरज, और भी एंजॉय करता पत्ता अगर पिछवाड़े में दर्द नहीं होता तो. आहा, नज़ारा अच्छा है. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we drove. Okay guys, so started again after a quick break of coffee, क्योंकि कॉफ़ी तो ज़रूरत है. शायद 2 घंटे और लगेंगे. Back then, everyone was near. Woke up from an old alarm. Bones could barely roll from bed. Stood on an empty bathroom rug. It's almost 38 degrees now, और फिर भी चले जा रहे हैं यार. पहुंचना पड़ेगा जल्दी. ये तो अच्छा नज़ारा है भाई. इतनी गर्मी में भी कुछ तो अच्छा दिखा. 139 kilometers to Bangalore. बस रास्ता ऐसा ही हो जाए. Okay guys, Hirok is here. So guys, we are at Kolar and now we are starting from here. 50 kilometers to go. We'll be home again. Hold on, we'll be home again. गए हैं भाई साहब बैंगलोर. Well, look what we have here. Hold on, Nice. we'll be home again. Hold on, we'll be home again. Hey guys, if you like this video, please do like and subscribe.
And I know it's been long, but as I'm here right now in Bangalore, so I'll be doing more trips to the south of India, and you'll be seeing more and more vlogs. So please do wait, and for my vlogs now I get time to edit and upload my vlogs. So पहन लेते हैं टैग और चलते हैं